हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 40 वर्ड्स जो आपकी हेल्प करेंगे बैंड 8 एक्वायर करने में। अगर आप इन 40 वर्ड्स को अच्छे से समझ के इनको यूज करना सीख लेते हो तो आई गारंटी यू विल बी एबल टू स्कोर हाई। तो ये 40 वर्ड्स दोस्तों एक बार आप देख लीजिए। हमारा पहला वर्ड है इम्पोर्टेंट और इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। दोस्तों कई बार हम वर्ड रिपीट करने पे मजबूर हो जाते हैं, तो दोस्तों ये 40 वर्ड्स और इसके सिनोनिम्स हम आपको दे रहे हैं ताकि आप इनके सिनोनिम्स को रिपीट कर पाओ, ताकि बार बार आप एक ही वर्ड यूज करके अपने एग्जामिनर को बोर ना करो। तो ये वर्ड्स देखिए, इंपॉर्टेंट, स्टार्ट, लीड, मैनी, प्रॉब्लम, यूज, बट, इम्पैक्ट, फ्यू, focus, not important, huge, increase, particularly common, too much, in the end, solve, before, completely, lack, responsibility, good, improvement, people, give, basic, needs, less, criminal, victim, only, distribute, imprisonment, so, contribute, plethora, mesmerize, summarize, dilemma। तो दोस्तों ये 40 वर्ड्स हैं, इनको एक बार देखिए। डायलिमा, इसके सिनोनिम है क्राइसिस और प्रॉब्लम। समराइज, कैप्चुलेट, mesmerize, fascinate, captivate, hypnotize, plethora, plenty, numerous, contribute, add या chip in। सो के लिए आप यूज कर सकते हो thus, therefore या consequently, imprisonment, punishment, distribute, allocate, only, solely, exclusively, victim, sufferer या prey, criminal, lawbreaker या offender, less, scant या scare, needs, requirements or necessities, basic, fundamental or rudimentary, give, give के लिए आप यूज कर सकते हो invest या devote, and people, masses या individuals, improvement, enhancement or development, good के लिए superior, effective, pragmatic, responsibility, accountability या फिर account for, lack, devoid, absent, scarcity, completely, entirely, absolutely, altogether, certainly, before, prior to, solve, mitigate, alleviate, ameliorate, in the end, at the end, eventually, finally, ultimately, too much, excess, enormous, common, widespread, particularly, especially, increase, escalate, rise, huge, vast, mammoth, myriad, not important, insignificant, trivial, or unimportant, focus, priority, emphasize, prominence, few, rare, या scare, or impact, influence, या effect, but, however, nevertheless, although, despite this, use, utilize, या deploy, problem, issue, threat, many, numerous, several, multifarious, lead, pave the way, result in, end up, start, begin, set of, commence, initiate, important, significant, crucial, decisive, key। दोस्तों ये वर्ड्स हैं, अगर आप इन वर्ड्स को अच्छे से यूज करना सीख जाओगे, आई गारंटी यू विल बी एबल टू स्कोर बैंड 8। ये आपको स्पीकिंग में, राइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। और इन्हीं में से वर्ड्स आपको लिसनिंग में सुनने को मिलते हैं, तो प्लीज स्पेलिंग पे भी ध्यान दीजिए, सो यू कैन हैंडल दीज वर्ड्स इफेक्टिवली एंड यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आई होप दैट ये वर्ड्स आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। इन वर्ड्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट आईएलटीएस से रिलेटेड हम मटेरियल लेकर आएंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट कर पाए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू इट नाउ, because we'll bring more exciting videos for you. Thank you so much. See you next time.